Hi guys, as we promised, as a backup to our episode, which was watched by a lot of you, the political reasons and other reasons why boycott Lal Singh Chadda was trending, and we did go and see the movie. And you got to be thankful to us because we bit the bullet for you guys. We've suffered the torture so that you guys don't have to. Even though Amna did have some hopes from the movie, and to be honest, even I did as just an art piece. But no, man, the movie doesn't measure up anywhere. It's not even average; it's below average. But yeah, first things first, look, feels good always to go to the theaters to see kids, elders, everyone there. But my hall occupancy was like 30-35%. So clearly, not that many people had come. Brahmastra's trailer on big screen looks fab with Amitabh Bachchan's deep baritone voice, the sexiest voice that ever was there. And that irritating ad of Akshay Kumar, Hero Panthi poo poo karne mein nahi hai, please get rid of that. Coming to the movie, Atul Kulkarni's disclaimer, Amna, is the longest ever. Where in the background he's talking, like, doing the background this for it for 3 minutes. Like, kitna lamba disclaimer hai, bhai, the longest in the history ever. So you can come a little late for the movie. Yeah, my sister was saying कि डर का माहौल है इसलिए ये लोग disclaimer. नहीं, अब इतनी फिल्म बनाई है ब्लूपर्स और इसके साथ तो सही है, मतलब after that also it's not going to help them. So movie starts on a promising note, great note, the mother son bond, Punjab background, cute little Sardar kid, fabulous casting of both the young girl and the young, in fact they are the best part in the movie. They are like, the kids are fabulous. Mona Singh is excellent, brilliant in her role, and the Punjabi accent, the mannerisms, the kid, it's fabulous. And you're like, man, he struck gold again. But 15 minutes after into the movie, and then the other age starts, and AamirKhan has hammed his way through this performance. And I kid you not, his tone is just like, hmm, hmm, This is his acting for 2 years that he's done, where he's tried to show a below IQ guy who's special in his own way. So I don't know what he's done. Not expected from Mr. Perfectionist to do That's all he does, and you're like, it's unbearable now. It's not acting; it is imitation, and a cheap one at that. It looks like buffoonery. You're not like, endearing to me. Like the way, if you see Ranbir Kapoor when he played Sanju Baba in his, Sanju, he was the character. He was so brilliant. Like the mannerisms, you felt like he had like got his atma. So bad casting. Maybe they could have got Ranbir, or maybe Amir could have stopped taking us for granted. A lot of other bloopers. In Forrest Gump, what I understand, even though I've not seen the movie, I've seen it in parts. Amna has seen it. It's a cult classic. There was a reason why that sub IQ, below IQ, average IQ Tom Hanks goes, because in Vietnam it was brutal. There was a lot of outcry by people back in US about the Vietnam war. They send these guys who were below the normal IQ, and there was a lot of backlash against that. That how could you send people like that so that they could be cannon fodder? So to hear show a guy going like that in Indian Army, if he gets big batch for kind of putting down the Indian Army, I thought, don't play victim. He deserves it because it's like a buffoon character he's created, and it kind of dilutes nationalism. I don't know what that thing is. And why the hell do you have to get friendly with the terrorists and all that? India has moved on. That part of India decided to cut away, kill us, lives to exist to kill us. We have moved on. Bollywood, get a grasp on your reality. It will piss off people. Yeah, you might say, he says, oh, hum log dushman dost. Nahi, we are not their counseling center. We are not like, deranged boyfriend jiska girlfriend like, aajao tum counseling center. India has moved on. So Bollywood, please get out of that. It's only going to get more repulsive that way. Movie is a drag. Even though I can understand when he must have read it on paper, like showing the events, the major events, like, the what happened in Golden Temple during the Bindrawala killing, or what happened later in 84 riots. And, it's like those events happening, and Amir is growing up as Lal. So that's good, but it's not come down on paper. Damn long, 2 hours, 45, 50 minutes. And at the end, you're like, khatam ho ja mere baap. And it's a test of your patience. Like I said, acting, he's just not got the pulse right. I remember, if I remember correctly, when Amitabh Bachchan did that iconic role in Agnipath, right? Vijay Dinanath Chauhan, he saw his dubbing. Of course, aajkal to dubbing nahi hoti, you do it in real time and all, right? He changed the tone in which he was talking. So the pulse itself is not good. AamirKhan has done a ham job. Like,
Tushar Kapoor has basically done this. I'm like, Tushar Kapoor ki acting lag rahi hai, right? And I'm still being very generous. Kareena Kapoor is very good. Yes, Kareena Kapoor is very good. She's looking stunning, gorgeous, and she's played her role well. Movie like that, and like I said, that Indian Army whole angle, it does kind of, it just mixes fiction for no reason. The whole Pakistani terrorist winning him over. Who does that? We don't want to win over, especially terrorists. So, uh, Lal Singh Chadda out of 5, 1.5, 1.5. Yeah, 1.5. So I don't agree with 1 and 1.5 rating. It's a very low, I think. It's a pretty average movie, like 2.5 or 3 in between. तो मतलब 1 is like so low, I think. And मेरी फैमिली को पसंद पसंद क्या है, उनको अच्छा लगा फैमिली के साथ जाना, तो सेट हाँ ठीक था. बीच में कुछ मूवमेंट भी थे जो पसंद भी आए. एंड आई थिंक द बेस्ट वन वाज द मलेरिया का जो एनालॉजी था. जब भी जो प्रॉब्लम थी उसको एक बिलो एवरेज बच्चों को समझाने के लिए सिंपली उसको मलेरिया कहना, बट इट्स वेरी क्लेवर आल्सो एंड ओरिजिनल. वो एक चीज था जो मुझे अच्छा लगा. दूसरा, जब फॉरेस्ट गम आपने देखी हो ऑलरेडी, एंड जिस तरह की ब्रूटल ट्रूथ और ऑनेस्ट ट्रूथ और जिस लेवल की चीजें उसमें दिखाई जाती है, लाइक वी नो कि फॉरेस्ट गम के को एडमिशन दिलाने के लिए उसकी माँ ने क्या किया है. This is something a very dirty truth you are watching, and a very strong mother who is ready to do anything for मतलब उसके अपने बच्चे के लिए. तो वो चीज इंडिया में दिखाना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, बट देन यू मिस दैट रॉ थिंग. तो वो चीज तो नहीं थी, बट स्टिल आई थिंक जिन्होंने फॉरेस्ट गम नहीं देखी है उनके लिए स्टोरी अगर नहीं है तो उन्हें अच्छी भी लग सकती है. बट इवन आमिर की स्टैंडर्ड से इट्स नॉट दैट ग्रेट मूवी. मैंने उसी थिएटर में देखा जहां मैंने रंग दे बसंती जैसी मूवी देखी थी, एंड सेम थिएटर में आई वाज थिंकिंग कि कहाँ रंग दे बसंती, कहाँ लगान, कहाँ 3 इडियट, और कहाँ लाइक वो मूवी ऐसी थी जिसको कि देखने के बाद आप 4-5 दिन तक उसके थॉट्स आते थे, रंग दे बसंती देखने के बाद, एंड आपको थोड़ा चेंज कर देती थी. तारे जमी देख के बाहर आओ तो आपको लगता है आपने कुछ सीखा है. ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है इस मूवी में, सिंपली टू पुट. एंड हाँ, अगर किसी को वन टाइम देखना है, मूवी बहुत दिन हो गए तो जाके देख सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है, लाइक आई डोंट वांट टू बी सो हार्श, बिकॉज देन यू विल गेट द लेबल ऑफ बीइंग बिगट की यू आर सेइंग दैट बिकॉज यू वांट टू कि बायकॉट करो, बट नथिंग लाइक दैट. अगर वो करना होता तो मैं पहले ही नहीं कहती कि मत देखो ये मूवीज एंड ऑल, मैं खुद नहीं जाती देखने. बट अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो आई वुड से कि ऐसी बनी थी, इसमें किसी की क्या गलती है, किसी की क्या वो है. आपने ऐसी जो डिलीवर करोगे उतना तो आपको एक्सपेक्टेशन भी वही रखना चाहिए. माँ बेटे का जो था, जो एक प्योर लव था, वो बहुत अच्छा लगा. इवन जिस लड़के ने आमिर खान के बचपन का रोल निभाया, आई से कि वो बहुत परफेक्ट था, है ना. वो बिल्कुल उसी को पूरी मूवी में होना चाहिए था. एग्जैक्टली. एंड वो बफून भी नहीं लग रहा था, एंड ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट गम में भी ये बात बताई गई है कि बेसिकली वो कोई वो नहीं है कोई क्या कहते हैं उसको, यू नो उसका आईक्यू बहुत लो नहीं है, उसका आईक्यू थोड़ा सा लो है. तो वो है एवरेज चाइल्ड के जैसा ही, बट थोड़ा सा मात खा जा रहा है. तो वो बच्चा वैसे ही लग रहा है. बट आमिर खान तो कुछ अलग ही कैरिकेचर लग रहा है, लाइक कोई ही इज लाइक ट्राइंग टू बी समथिंग, एंड देन सेम पीके वाला मोड उसका आ जा रहा है, जहाँ आंखें ऐसे खड़ी है एंड द सेम थिंग रिपीटेटिव हो गया. तो वो मजा नहीं आया. आई थिंक आमिर खान एज अ इवन एक्टर फेल देयर. बाकी चीज तो छोड़ दो. करीना कपूर मुझे कभी खूबसूरत नहीं लगी. आई जस्ट फाइंड हर फेयर एंड लवली. तो दैट्स इंडियन प्रॉब्लम कि इफ अ गर्ल इज सो फेयर तो शी कंसिडर्ड अ ब्यूटीफुल वेरी, बट आई डोंट फाइंड हर प्रिटी. सो ठीक था मेरे लिए. बट सिंस सी वो ऑलरेडी एक बॉलीवुड की अदाकारा है, तो वो रोल भी ठीक था उनका कि हाँ वो जा सकती है इंडस्ट्री में, कर सकती हैं काम. ओवरऑल आई वुड से कि अगर आपको देखना है पिक्चर एक बार अपने फैमिली के साथ तो देखा हो, बट ऐसा कुछ ग्रेट एक्सपेक्टेशन था प्लीज मत जाना कि हाँ कुछ मजा ही आ जाएगा, आमिर खान ने क्या मूवी बनाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. Right. So from my side, no need to go. From Amana's side, go once. If मतलब बहुत टाइम से नहीं गए हो तो then let us know in the comments कि अगर तुम गए तो what do you want to tell Amana. अगर तुम नहीं गए तो तुम मुझे क्या थैंक यू करना चाहते हो. One good song which is like फिर ना ऐसी रात आएगी. Like if the movie was really great,
that song would have like been like an iconic song. Of course, the movie is very average, not going like, I doubt it'll even be a hit. I think it's going to be a flop. That's a very like, that's a level of a song you feel in Amir Khan movie on in a big budget, like actor who's given so many blockbusters and who really takes care of the craft. So yeah, and for me, a lot of emotional scenes also didn't do. Like, imagine dying scenes didn't do anything for me. It was very emotional. So I was like, हाँ ठीक है क्या चल रहा है ये? So, but yeah, I can't like 2 hours 45 50 minutes. नहीं हो I पाया. can guarantee you One and कि a anyone half from who me out of 5, 2.5 out of 5. Last comment, Amma. I can guarantee you anyone has watched Forrest Gump can not like this movie. This is nothing like a Forrest Gump. I mean, Forrest Gump तो मैंने लैपटॉप पे देखी थी, imagine, and then every scene you feel like a stuck to the, मतलब you just feel for him. तुमको लगता है कि तुम उसके साथ वो जिंदगी जी रहे हो, क्या हो रहा है क्या हो रहा है. And यहाँ बड़े पर्दे पे देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि they are trying to make something very great, and वो जो उनका कोशिश है वो ज्यादा दिख रहा है, but वो greatness आ नहीं रही है. ऐसा personally मुझे feel हुआ. वो कुछ, जबकि Indian movies are more on emotional side. That's what I believe, but still you don't feel that emotions जो आप एक अमेरिकन से फील करते हो, despite having all those cultural differences. तो वो चीज एक था. एंड इसके अलावा और मैं क्या ही बोलूं, इट्स आई वुड से कि it's not worthy. मतलब बीइंग इवन आमिर का फैन एंड ऑल, आई थिंक इट्स, जाने दो उसको. हाँ, एक बॉयकॉट के ऊपर मैं बोलूंगी कि बॉयकॉट का असर हुआ या नहीं. मैं सोच रही थी कि जेन्युइनली एक्चुअली उल्टा असर हुआ है. खालिद के यहाँ तो 30% सीट्स थी ना ऑक्यूपाई, मेरे में तो फुल थी. एंड आई वाज सरप्राइज, क्योंकि ये जो मैंने बुक किया था बुक माई शो से, वहां से बिल्कुल कम दिखा रहा था. बट मे भी लोग वॉक इन करके आए थे रक्षाबंधन की वजह से. एंड स्टिल किसी से मेरी बात हो रही थी, तो हिंदुस्तान ऑफ, जो ठग ऑफ हिंदुस्तान है, वो भी मूवी फ्लॉप हुई है आमिर खान की. तो ऐसा नहीं है अगर उसने खराब डिलीवर किया तो फ्लॉप हुई है, बट उसकी पहले दिन की कलेक्शन फिर भी 50 करोड़ के आसपास थी. अगर इसकी भी 40, इसकी बजट आधा है ठग ऑफ हिंदुस्तान से, तो आई वुड इवन से कि अगर 30 भी हो जाती है तो दैट आई वोंट गिव की बाइकआउट का कुछ बहुत असर हुआ है. लेकिन अगर उससे कम होती है तो दैट मीन्स के बाइकआउट का भी एक असर हुआ है. Right. All right, guys. So that was our review of Lal Singh Chadda. Do let us know your thoughts, comments, what you think about it, and please keep on liking, sharing, and subscribing our content. And bye for the day. Bye bye.